management, we started with what is a process state diagram, process control law. Then we see what are threads. Then we talked about process scheduling, and lastly, we were discussing about process synchronization, the critical section problem, and each and everything. So this is the last topic of process management, which we have to discuss in next 3-4 lectures. And it is one of the most easiest as well as interesting topic of operating system as far as I concern. So just let me start. What is a deadlock? So one of the problem of deadlock we already seen somewhere in the past also. Like if I talk about the dining philosopher problem, so there was a deadlock situation when all philosophers were able to have their left chopstick, but nobody was able to have the right chopstick, and they cannot eat until they have both the chopsticks left as well as right. So that was a deadlock problem. So let us see in detail what is a deadlock, what is a deadlock problem, and in this entire chapter we will see how we can prevent, how we can avoid, how we can detect the deadlock, or if even deadlock occurs in our system, how we can recover the deadlock. Okay, so this is the content of this chapter number 7. We will see what is the deadlock problem, then we will talk about system model, then in the characterization we will talk about the necessary conditions for the deadlock, and lastly there are some methods to handle the deadlock, such as deadlock prevention, avoidance, detection, and deadlock recovery. So this is all about this chapter number 7. Okay, so this is the diagram which represents what is a deadlock. So clearly you can see we have two different threads here, T0 and T1, and we have two different resources here, which is resource 1 and resource 2. Now you can see T0 thread is holding resource 1 and is waiting for resource 2. So T0 का task कब कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूशन कब फिनिश होगी, जब उसे दोनों रिसोर्सेज मिल जाएंगे. सिमिलरली T1 का टास्क कब कंप्लीट होगा, जब उसे दोनों रिसोर्सेज मिल जाएंगे, रिसोर्स 1 एंड रिसोर्स 2. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? T0 is holding resource 1 and is waiting for resource 2 to complete its execution, whereas thread T1 or process T1 is holding resource 2 and is waiting for resource 1. Now this is the issue here. Both the threads T0 and T1 are holding one resource and are waiting for another resource to complete their task, to complete their execution, but the resource for which they are waiting will never be given or will never be preempted by the other thread, because the T1 requires resource 1 to fulfill its task, whereas T0 requires resource 2 to fulfill its task. Both of these threads, T0 and T1, are waiting for one resource, but that particular resource will never be preempted by any of the process, because both of them are waiting for those process. So this is the situation of deadlock. This is known as deadlock situation, जहाँ पर दो processes या दो से ज़्यादा processes भी हो सकते हैं. तो this is the simplest example where we have two processes. Each of them are holding one process and they are waiting for another resource, which will never be they will never get, because वो किसने hold किया हुआ है? किसी और process ने, जो further किसी और resource की wait कर रहा है अपने task को complete करने के लिए. So this is the entire scenario of deadlock. So the deadlock problem is a set of logged processes, each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process in the set. So यहाँ पे हमने simplest दो threads की या दो process की बात की है. So a set of logged processes. तो ऐसा हो सकता है कि दो से ज़्यादा processes हो. If I talked about dining philosopher problem, we were having 5 different philosophers, तो वो एक process की तरह ही act कर रहे थे. So a set of blocked processes. So यहाँ पे T0 भी blocked है, T1 भी blocked है, because दोनों ही अपना task complete नहीं कर पा रहे. Reason is T0 requires resource 2, T1 requires resource 1, और दोनों को ही resource 2 और resource 1 नहीं मिलेगा, because both
wants other resource to fulfill their completion or to complete their execution. So this is another example. If any system is having two disk drives or any resource, so P1 and P2, there are two different processes. दोनों के पास एक एक डिस्क ड्राइव है और दोनों को ही दूसरी डिस्क ड्राइव चाहिए अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, बट डेफिनेटली उनमें से किसी को भी सेकंड वाली नहीं मिलेगी, बिकॉज दोनों इसी वेट में है कि पहले मुझे मिल जाए, वो प्रीएम्प्ट करे, देन आई विल एक्सेस एंड देन आफ्टर आई विल रिलीज द थिंग. सो this is what deadlock is, and another most common example of deadlock is something like this. So if we have a traffic, a road, some vehicles on the road, and if there is a two lane, there will not be any issue. But if any bridge comes across on the road, so the traffic will be one directional only, and you can see जो ये वाला व्हीकल था ये भी यहाँ आ जाएगा, एंड दिस पर्टिकुलर व्हीकल विल आल्सो बी हियर. सो नाउ देयर विल बी अ डेडलॉक सिचुएशन. दिस व्हीकल वांट्स दैट ये वाली कार या व्हीकल पहले पीछे जाए, और ये वाली कार चाहेगी कि ये वाली जो लेफ्ट साइड वाली कार है वो पहले पीछे हो जाए. सो दे बोथ आर वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर. तो बेसिकली डेडलॉक में क्या है, दो से ज्यादा प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं किसी एक इवेंट के अकर होने की, लेकिन वो इवेंट कभी भी अकर नहीं होगा, बिकॉज both of them are waiting for the same event to occur. So this particular car, left hand side car, is waiting that this particular car will move backwards so that I can move forward, and similarly the same thing, this car is thinking that this particular car will move backward, then I will go first, but both of them are not ready to move their car backward. So this is a kind of a deadlock situation. So you can see each section of a bridge can be viewed as a resource, and if a deadlock occurs, it can be resolved only if any one of the car back up, and this is also known as rollback or preempt resources that we will discuss in detail in further lectures. And several cars may have to be backed up if a deadlock occurs, and there is a possibility of starvation also. So this is the concept of deadlock. I think this is very much clear to you. So here the vehicles or the cars are the processes, and these bridge or the single lane road is a resource. So this is only we are having only one resource, and both wants to access those resources, but none of them would be able to access. Nobody wants to go backward, so there will be a deadlock situation. Now if I talk about the system model, so there can be different type of resources. तो एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस भी हो सकते हैं एंड बहुत सारे रिसोर्सेज भी हो सकते हैं. सो रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज कैन बी मेमोरी स्पेस, resources can be input output devices, resources can be a CPU. So definitely process को जब भी अपना task execute करना है उसको कुछ ना कुछ resources की requirement होती है, and each resource type Ri has Wi instances. तो ऐसा हो सकता है कि हर रिसोर्स के आगे कुछ इंस्टांसेस हो. इंस्टांसेस मींस उतनी कॉपी हो. सपोज एक सिस्टम के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो बहुत सारे प्रिंटर्स हो सकते हैं. तो अगर 5 प्रिंटर्स हैं तो दैट मींस उस रिसोर्स की, उस प्रिंटर की 5 इंस्टांसेस हैं. और अगर हम यूनी प्रोसेसर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास सीपीयू हमेशा एक ही होता है. सो सीपीयू इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिसोर्स. प्रोसेस को सीपीयू चाहिए होता है अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए. सो डेफिनेटली सीपीयू विल बी हैविंग ओनली वन इंस्टेंस, whereas input output devices may have more than one instance. Printer can be 2 or 3 connected to a system. And if any process wants to utilize any resource for its completion, for its task completion, so this is the scenario. तो सबसे पहले process request करेगा उस resource के लिए, और जैसे ही उसको वो रिसोर्स मिल जाएगा देन उस रिसोर्स को वो यूज करेगा अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए. एंड जैसे ही उस प्रोसेस का टास्क कंप्लीट हो जाएगा वो उस रिसोर्स को रिलीज कर देगा. सो दिस विल बी द सिनेरियो, दिस विल बी द ऑर्डर इफ एनी प्रोसेस वांट्स टू एक्सेस और यूटिलाइज एनी रिसोर्स इन द सिस्टम. सो रिक्वेस्ट, यूज एंड रिलीज will be the order. And this is very important, deadlock characterization. So these are 4 different conditions for the deadlock to occur. So if all 4
conditions will hold simultaneously, then only deadlock will occur. अगर इनमें से कोई एक भी condition hold नहीं हो रही, then deadlock नहीं होगा system में. So just let's try to understand what is mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait. So भाई ये चारों conditions एक साथ satisfy होनी चाहिए, तब हमारे system में deadlock आएगा. अगर इनमें से एक भी condition satisfy nahi ho rahi, then there will not be any deadlock in the system. So very first problem or the condition is the mutual exclusion. So we have heard this term in the concept of semaphores also. So simply mutual exclusion means at least one resource must be in the non-shareable mode. तो भाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है कि कम से कम एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए हमारे सिस्टम में जो नॉन शेयरेबल होना चाहिए, जिसको कोई भी शेयर ना कर सके, यानी कि उस रिसोर्स को एक टाइम पर एक ही प्रोसेस होल्ड कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. दैट मीन्स ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स. तो हमारे सिस्टम के अंदर एटलीस्ट एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो नॉन शेयरेबल हो, जिसे साइमल्टेनियसली मोर देन वन प्रोसेसेस एक्सेस ना कर सके. Second condition for deadlock to occur is hold and wait. So hold and wait का ही हमने अभी example देखा यहाँ पे. If I talk about this particular diagram, so what hold and wait condition says, a process holding at least one resource. तो भाई ऐसी situation होनी चाहिए कि process ने एक at least एक resource को hold किया हुआ हो और वो wait कर रहा हो और किसी resources की जो किसने hold किए हुए हैं किसी और process ने. So this is the meaning of hold and wait. So a process holding at least one resource as well as it is waiting to acquire additional resources which are held by the other processes. So here you can see T0 is holding resource 1 and is waiting for resource 2 which is held by thread T1. And if I talk about T1, T1 is holding resource 2 and is waiting for resource 1 which is held by the process T0. So this is hold and wait condition. No preemption simply means resources cannot be preempted. तो भाई अगर किसी एक प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को होल्ड कर लिया तो वो उसे बीच में प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता जब तक वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर ले. तो यानी कि अगर मैं इसी डायग्राम की बात करूं तो T0 रिसोर्स 1 को तब तक प्रीएम्प्ट नहीं करेगा जब तक उसे रिसोर्स 2 ना मिल जाए. और T1 की बात करें तो T1 के पास रिसोर्स 2 है, वो रिसोर्स 2 को तब तक प्रीएम्प्ट या रिलीज नहीं करेगा जब तक उसे रिसोर्स 1 ना मिल जाए. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नो प्रीएम्प्शन. अ रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड ओनली बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट आफ्टर दैट प्रोसेस हैज कंप्लीटेड इट्स टास्क. तो भाई प्रोसेस रिसोर्स जिस रिसोर्स को उसने होल्ड किया हुआ है वो तभी उसको प्रीएम्प्ट या रिलीज करेगा जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा. इन बिटवीन वो ये नहीं करेगा कि हाँ T0 को चाहिए मैं इसे दे देता हूँ कि मेरे पास रिसोर्स 2 है सो आई एम जस्ट गिविंग इट फॉर T0. सो दैट वुड नॉट बी द केस. सो दोनों या जितने भी प्रोसेसेस हैं जो प्रोसेस रिसोर्स उन्होंने होल्ड किया हुआ है वो उसको तब तक नहीं रिलीज करेंगे जब तक उनकी टास्क कंप्लीट नहीं हो जाती. दिस इज द मीनिंग ऑफ नो प्रीएम्प्शन. एंड लास्ट एंड द इंटरेस्टिंग condition for the deadlock is circular wait. So circular wait simply says there exists a set of processes from P0 to Pn minus 1 or suppose Pn of waiting processes such that P0 किसकी वेट कर रहा है, एक रिसोर्स की जो किसने हेल्ड किया हुआ है P1 ने. P1 वेट कर रहा है उस रिसोर्स की जो किसने हेल्ड किया हुआ है P2 ने एंड सो ऑन. सो Pn-1 प्रोसेस कौन से रिसोर्स की वेट कर रहा है जो किसके पास है, अभी Pn के पास है. और जो लास्ट प्रोसेस है Pn is waiting for a resource which is held by process P0. So this is a kind of a circular wait. And dining philosopher problem की अगर बात करें तो exactly हमारे पास जो deadlock situation आ रही थी वो circular wait का ही एक केस था. तो वहां पे बेसिकली क्या हो रहा था, 5 philosophers P0 क्या वेट कर रहा था कि P1 हमारा उसको C1 दे दे. देन P1 वाज वेटिंग दैट C2 की रिक्वायरमेंट थी तो उसको P2 उसको रिलीज कर दे. सो दिस इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर वेट. सो ऑल द फिलोसोफर्स वर वेटिंग फॉर देयर राइट हैंड साइड फॉर्क जो किसने होल्ड किया हुआ था उससे नेक्स्ट फिलोसोफर ने. सो दिस इज
the concept of circular weight, and these are 4 necessary and sufficient conditions for deadlock to occur in a system. तो अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, 3 हो रही है, एक नहीं हो रही, देन ऑल्सो डेडलॉक विल नॉट अकर। तो ये चारों साइमल्टेनियसली एक साथ होल्ड करनी चाहिए किसी भी सिस्टम में, देन ओनली डेडलॉक विल अकर इन द सिस्टम। नाउ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज वन ऑफ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेडलॉक्स इन द सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम में अगर हमें डेडलॉक को रिप्रेजेंट करना हो विद द हेल्प ऑफ the graphical representation diagrammatically, so resource allocation graph is the most common method which is used to represent a system or the deadlock in a system. So graph, as you all know, आप लोगों ने data structure या discrete mathematics में पढ़ा होगा, graph simply consists of set of vertices and set of edges. Now here in the case of resource allocation graph, we have 2 different types of vertices. One represents the processes and another set of vertices represents the set of resources. Similarly, edges are also of 2 different types. One is known as request edge and second is known as assignment edge. So request edge का काम क्या है? Suppose any process PI wants to use or wants to access resource RJ. So as we have studied here, this will be the scenario. So first of all, the process will request for that particular resource. So जब भी process request करेगा, this edge will be known as request edge and this will be a directed edge. So PI request for resource RJ. This is the meaning of this request edge, and if RJ is available and if it is assigned to the process PI, then that particular edge will be known as assignment edge, and it is also a directed edge. And you can see this RJ resource has been assigned to this process PI for which it has requested earlier. So this is the meaning of assignment edge. So request edge is from process to resource and assignment edge is from resource to process. And there are 2 different types of vertices. As we know that in a system we have certain processes and certain resources. So processes के लिए हमारे पास एक अलग type of vertices हैं और resources के लिए हमारे पास एक अलग type of vertices हैं. So suppose P is the set of processes P1 to Pn, which is the set which consists of all the processes in the system. Similarly, R is another set which is the set of all the resource type in the system. So this is what we will use in the resource allocation graph. And if you see these are the notations. तो अगर हमें किसी भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, वी विल यूज अ सर्कल, एंड इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट एनी रिसोर्स in the resource allocation graph, it will be represented by rectangle or square, and within this square box you can see these are 4 different instances. So it represents कि इस particular resource type के कितने instances available हैं. So if I talk about printer, so there can be 4 different printers connected to a single machine. And if I talk about a CPU, so it is possible that only एक ही CPU, हम generally uniprocessor system की बात करते हैं. So in that particular case, we have only 1 instance. And this is the request edge PI request instance of RJ. So RJ के पास 4 instances हैं. So PI is requesting one of the instance of resource RJ. And here you can see PI is holding an instance of RJ. So this is the representation that one of the instance of resource RJ has been assigned to process PI. So this is the notation. These are the notations which is used in the resource allocation graph. And this is one of the best method to represent the concept of deadlock in a system. Okay, so these are some of the examples of a resource allocation graph. So if I talk about this particular graph, so these are the same notations which I have just discussed here. So we have process, we have resources, we have request edge, we have assignment edge. So here you can see it represents a complete system, and this is the resource allocation graph where we have 3 different processes, P1, P2, P3, and we have 4 different resources.
So we have R1 resource, R2 resource, R3 resource, and R4 resource. So it can be anything. Suppose R1 is a CPU, R3 is suppose a monitor. Monitor is generally also one copy in the system. And suppose these are printers, R4, and suppose R2 is the memory space. So it can be any resource. So here you can clearly see we have 3 different processes which are represented in a circle, and we have 4 different resource type which are represented in a rectangle, and the dot inside these rectangles represent the instances. So R1 and R3 is having only one instance. So suppose it is a single CPU and a single monitor, and suppose R4 is a printer. So that means we have 3 different printers which are connected to a single system. And suppose this is a kind of a memory or any other file or anything, R2 is having 2 different instances. Now, with this particular graph, you can clearly see process P1 is holding one instance of R2. R2 का एक instance P1 ने hold किया हुआ है, and P1 is requesting for the instance of R1. तो R1 का एक ही इंस्टेंस है, तो P1 is waiting for R1, और जो R1 का इंस्टेंस है वो ऑलरेडी किसने होल्ड किया हुआ है? P2 ने, and P2 is also holding another instance of R2, but process P2 is waiting for resource R3, and resource R3 is held currently by process P3. So this is just an example of a resource allocation graph to understand the basic things. तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई प्रोसेस P1 ने R2 को होल्ड किया हुआ है, वो R1 के लिए वेट कर रहा है. प्रोसेस P2 की बात करें तो P2 के पास R1 भी है और R2 भी है, बट P2 is waiting for resource R3. एंड अगर प्रोसेस P3 की बात करें तो P3 के पास R3 है और प्रोसेस P3 अभी किसी भी रिसोर्स के लिए वेट नहीं कर रहा, उसने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की हुई. सो दिस इज द सिंपल सिनेरियो टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. Now, this is another example of resource allocation graph, and in this particular case, you can see that there is a deadlock. तो अब हम जरा सोचेंगे कि यहाँ पे हमें देखने से कैसे पता लग गया कि यहाँ पे deadlock है, यहाँ पे हमने नहीं बोला था कि deadlock था. So just let me discuss the concept also. तो अगर मैं इसी example की बात करूँ तो जो हमारा ये वाला एग्जाम्पल है, दिस इज अ सेम एग्जाम्पल, सिर्फ एक नई एज हमने इसमें ऐड की है. नाउ हियर P3 इज नॉट रिक्वेस्टिंग फॉर एनी ऑफ द रिसोर्स, बट इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम each and everything is same, but now process P3 is also requesting for one of the instance of resource R2. तो सिर्फ एक edge add करने से इस system में deadlock आ जाएगा. So how it will happen? So just let's see it. So I hope this thing is very much clear to you, how to represent various processes and resources and what are the meaning of the different kinds of edges. So just look carefully. जो हमारी request edge होती है वो हमारे रेक्टेंगल के बाहर रहती है. सो P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R1, सो जो आपका एरो है वो यहाँ पे है, लेकिन जो हमारी असाइनमेंट एज होती है वो हमारे को क्या बताएगी, कौन सा इंस्टेंस एक्चुअली असाइन हुआ है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को. तो जो हमारी असाइनमेंट एज है वो हमेशा हमारी इंस्टेंसेस से स्टार्ट होगी, प्रोसेस तक जाएगी. बट इफ प्रोसेस P2 वांट्स टू हैव R3, देन द एज विल बी आउटसाइड द rectangle. So you have to be careful regarding this also. Okay, so let's talk about this example, how deadlock is there. So here you can see process P1 is holding R2 and is waiting for R1. Process P2 is holding R1 and R2 and is waiting for R3. And now process P3 is holding R3 and process P3 is waiting for one of the instance of R2. So यहाँ पे हमने सिंपल टाइटल में लिख दिया रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद अ डेडलॉक. सो कैसे पता लगेगा? सो भाई एक सिंपल सा सिनेरियो है, वी हैव टू यूज दैट इफ योर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल, दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक. If your resource allocation graph do not contain any cycle, any loop, that means there is no deadlock for sure. So let me go to this particular example. So here you can see this is the arrow because all are directed edges. So this is the arrow, this is the arrow, this is the arrow.
नाउ अगर इस वाले एरो की डायरेक्शन अपोजिट होती तो यहाँ पे भी एक साइकिल बन जाती, बट इन दिस पर्टिकुलर केस वी डू नॉट हैव एनी साइकिल और वी डू नॉट हैव एनी लूप। सो साइकिल का मीनिंग क्या है कि मैं किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करूं, R2 से स्टार्ट करूं, तो मैं क्या वापस R2 तक पहुंच पा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ एजेस। सो R2 को अगर चेक करें, सो R2 टू P1, P1 टू R1, R1 टू P2, बट P2 से हम R2 पे नहीं जा पा रहे, सो देयर इजंट एनी लूप और देयर इजंट एनी साइकिल in this particular diagram. But if we look carefully at this resource allocation graph now you will see that this particular diagram is having two different cycles. तो भाई यहाँ पे दो अलग-अलग cycles बन रही हैं, तो वो cycles कौन-कौन सी है जरा ध्यान से देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ पहली साइकिल की, तो P1 से अगर मैं स्टार्ट करूँ, P1 to R1, R1 to P2, P2 to R3, R3 to P3, P3 to R2, and R2 to again P1. So this is one cycle which is forming in this particular resource allocation graph, P1, R1, P2, R3, P3, R2, P1. And second cycle is, let me start from P2. So this is P2, R3, P3, R2, P2. So इस particular resource allocation graph में we are having two different cycles, and that's why we are saying that this particular system contains a deadlock. And now let us see another interesting example, graph with a cycle but still there is no deadlock. So you can see in this particular example, in this particular resource allocation graph, हमारे पास एक साइकिल बन रही है डेफिनेटली, बट तब भी डेडलॉक नहीं आ रहा। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, लेट्स डिस्कस दैट। सो हियर यू कैन सी process P1 is holding one of the instance of resource R2 and it is waiting for R1. P2 is holding R1 and it is not requesting for any other resource. P3 is holding one instance of R1 and it is waiting for R2, and P4 is holding one instance of R2. So if we look carefully at this particular graph, so this is the cycle from P1 to R1, R1 to P3, P3 to R2 and back R2 to P1. तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में साइकिल भी बन रही है लेकिन तब भी डेडलॉक नहीं है। तो भाई डेडलॉक क्यों नहीं है? प्रोसेस P4 फर्दर किसी भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, या प्रोसेस P3 भी फर्दर किसी भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। तो P4 के पास R2 की रिक्वायरमेंट थी, P4 के पास R2 है, तो जब भी P4 अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा तो वो R2 को रिलीज कर देगा एक इंस्टेंस को। तो R2 के लिए कौन रिक्वायरमेंट, किसकी रिक्वायरमेंट है? प्रोसेस P3 की। तो जैसे ही P4 अपना टास्क कंप्लीट करके R2 को रिलीज करेगा, R2 को कौन होल्ड कर लेगा? प्रोसेस P3। तो भाई प्रोसेस P3 का अपना टास्क कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वो इन दोनों इंस्टेंसेस को रिलीज कर देगा, तो उसके बाद P1 उसको एक्सेस कर लेगा। सो यहाँ पर इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पे साइकिल होने के बाद भी डेडलॉक नहीं है। सो व्हाट इज द एक्चुअल सिनेरियो, कब डेडलॉक कंफर्म है, कब डेडलॉक कंफर्म नहीं है? सो जस्ट let's discuss that. Let's go to the conclusion for the today's lecture. So the overall conclusion is that if your resource allocation graph contains no cycle, अगर आपके resource allocation graph में cycle नहीं बन रही, then definitely there is no deadlock in the system. तो अगर resource allocation graph में कहीं भी cycle नहीं बन रही, then पक्का deadlock नहीं है। cycle नहीं है तो deadlock नहीं है। सेकेंड केस, अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कहीं भी साइकिल बन रही है, लूप बन रहा है, देन अगर सारे के सारे रिसोर्सेज के एक ही इंस्टेंस हैं, देन डेफिनेटली डेडलॉक है। और अगर कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके मोर देन वन इंस्टेंसेस हैं, देन डेडलॉक में अगर डेडलॉक हो भी सकता है और डेडलॉक नहीं भी हो सकता। So this is one of the most interesting thing which we have to remember. So just let me go through all these examples. So this is the first category जहाँ पे साइकिल बन ही नहीं रही थी, तो कोई भी लूप नहीं है यहाँ पे। तो लूप नहीं है तो मतलब यहाँ पे डेडलॉक पक्का नहीं है। There is no possibility of deadlock because there is no cycle. Second category, हमारे पास दो अलग अलग लूप बन रहे हैं, दो अलग अलग लूप बन रहे हैं और दो अलग अलग साइकिल्स बन रही हैं, लेकिन सारे के सारे रिसोर्सेज के वन इंस्टेंसेस नहीं है, R2 और R4 के मोर देन वन इंस्टेंस है। इस केस में डेडलॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।
तो इस केस में हमने देखा कि डेडलॉक है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे फर्दर, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर इन डेडलॉक अवॉइडेंस। बट फॉर श्योर यहाँ पे हमारे पास डेडलॉक डेफिनेटली है। लास्ट केस हमने डिस्कस किया, साइकिल बन रही थी और दोनों ही रिसोर्सेज के पास दो दो इंस्टेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पे डेडलॉक नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया कि P4 फर्दर किसी भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तो जैसे ही P4 का टास्क कंप्लीट होगा वो R2 को रिलीज करेगा। R2 को कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? P3, तो P3 के पास चला जाएगा, तो P3 अपना टास्क कंप्लीट करके फिर से R2 और इस R1 को रिलीज करेगा। सो समथिंग लाइक दैट, ऑल द प्रोसेसेस विल बी एबल टू गेट द रिसोर्सेज आफ्टर सम टाइम। तो इस केस में साइकिल बनने के बाद भी डेडलॉक नहीं है, that will depend upon the overall picture of the resource allocation graph. But अगर यहाँ पर दोनों resources के एक ही instances होते, then definitely यहाँ पे आपका deadlock होता. So this is what the overall story says. If graph contains no cycle, then no deadlock is there. But if graph contains a cycle or a loop, then there are two different cases. If all the resources have only one instance, then definitely deadlock is there if there is a cycle. But if some of the resources have more than one instances, then there is a possibility of deadlock. We are not sure of 100% deadlock. Deadlock may occur or deadlock may not occur. So this is the overall story. And methods for handling deadlock, this is our next topic which we will discuss in detail in the next lecture. So I'm just giving you a little bit brief introduction. So there are three possible ways to handle the deadlock. तो अगर हमारे सिस्टम में कभी भी डेडलॉक आ जाता है तो हम उसको तीन अलग अलग वे से हैंडल कर सकते हैं. Very first is that ensure that the system will never enter a deadlock state. हम कुछ ऐसा करें कि हमारा सिस्टम कभी भी डेडलॉक में जाए ही ना. तो इसके लिए हम बात करेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन की या डेडलॉक अवॉइडेंस की. या तो हम डेडलॉक को होने से प्रिवेंट कर दें या उसको किसी भी तरह से अवॉइड कर दें. Second method for handling the deadlock is allow the system to enter a deadlock state and after then we can recover the things. तो एक बार हम सिस्टम को डेडलॉक में जाने दें और उसके बाद कुछ डेडलॉक रिकवरी स्कीम से उस डेडलॉक को रिकवर करें. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इग्नोर द प्रॉब्लम. डेडलॉक हो रहा है, होने दो, एंड ऐसे प्रिटेंड करो कि डेडलॉक कभी हुआ ही नहीं था. And this is one of the most common method which is used by most of the operating system. Even Windows operating system uses the concept of deadlock ignorance. तो भाई आप सभी लोगों के साथ बहुत बार हुआ होगा, आपका सिस्टम कई बार हैंग हो जाता है, आप इतने सारे प्रोसेसेस इकट्ठे चला देते हैं, आप गेम भी खेल रहे हैं, आप वर्ड फाइल भी चला रहे हैं, आप गाने भी सुन रहे हैं, आप मूवीज भी चला रहे हैं, आप एक्सेल शीट में काम भी कर रहे हैं. सो समटाइम्स all the processes went into the block state. सभी के सभी अपने block state में चले जाते हैं, कोई भी execute नहीं कर पाता further. So this is the situation of deadlock and simplest method says ignore the problem. What we all do, we all just go to the restart button. या तो हम अपने सिस्टम को बंद कर देते हैं या रीस्टार्ट कर देते हैं और फिर से जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तब सब कुछ हमें सही मिलता है. So this is what is the deadlock ignorance. So just ignore the problem and क्या pretend करो कि कभी deadlock आया ही नहीं था, हमारा सिस्टम तो बिल्कुल स्टार्टिंग से सही चलना स्टार्ट हो जाएगा. So these are some of the different methods to handle the deadlock. And in the next 3 lectures we will talk about the first 2 categories. Here we will talk about deadlock prevention and deadlock avoidance. And this will be our last lecture which will cover deadlock detection and deadlock recovery. So this is all for today. And I hope the things are very much clear to you. And please let me know if anyone is having any doubt regarding anything, whatever we have discussed today.